In today's video, we are taking you to Riomaggiore, which is a colorful town in Cinque Terre. So guys, now we have reached Manarola. This is the second village after the Riomaggiore. Hi guys, good morning and welcome to हम लेकर जाते हैं आपको डिफरेंट प्लेसेस पे। हम आज निकल रहे हैं सिंque terre के लिए लास्ट प्लेसिया से। हमने लिया है सिंque terre पास और 48 यूरो 2 adult and 1 child। इसमें यह है कि आप तकरीबन राउटिंग पूरी देख कर सकते हैं विद सिंगल पास। आप जिस ट्रेन में जाना चाहें 5 विलेज में पहुँच सकते हैं। तो आप चलते हैं, निकलते हैं और पहुँचते हैं अपने पहले विलेज पर विद Riomaggiore। Here we come। Look at this compass. Nice. Come. Look at this very light. It adds so much light in this tunnel. हमारी आज की वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं Riomaggiore, which is the first town after the La Spezia. So it's a cute little town, colorful town. It has a marina as well. तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं Riomaggiore। यहाँ पर जो है बोट राइड्स भी लेते हैं और फेरी राइड्स भी लेते हैं, बट वी हैव टेकन सो मेनी बोट राइड्स, तो यहाँ पर हम जो है बोट राइड नहीं ले रहे। और आज हमें एक दिन में कवर करने हैं ऑलमोस्ट 5 विलेजेस। सो हम आपको अब दिखाते हैं कि एक दिन में कैसे कवर करते हैं 5 विलेजेस ऑफ सिंque terre। सो गाइस, इज द फेमस व्यू पॉइंट। यहाँ पर आने के लिए कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप आ जाएँ तो विल गेट द टाइम, अदरवाइज़ यहाँ पर लाइन लगती है टू क्लिक द पिक्चर्स। सो इट्स बेटर टू कम इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, सो यू कैन क्लिक योर ब्यूटीफुल पिक्चर ओवर हियर। अदरवाइज़ इतना क्राउड होता है कि आपको जो है अच्छे शॉट्स लेने में बहुत मुश्किल होती है। This whole village is on the height, so make sure you wear the comfortable shoes and have the strong legs because आपको काफ़ी हाइक करनी पड़ती है। It's on the height. So guys, now we have reached Manarola. This is the second village after the Riomaggiore. अगर आप in order जाते हैं तो otherwise आप पीछे से भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। This is also very cute little town, colorful town. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ क्या कुछ है। So guys, now we are going towards the viewpoint. It's also very high. उसको जो है हाइक करके आपको ऊपर जाना पड़ता है। So there's a lot of fog. तो मिलते हैं हम आपसे ऊपर व्यू पॉइंट पे। Let's go fun. What's up? Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here. Look at the ocean. It's going so calm. It's just so fun watching it. I still like the ocean.
So guys, this is the viewpoint. You have to come up there from the stairs and the steep height, and then you can come up and have the view of beautiful Manarola. So guys, people mostly go here for boat riding as well, but ये कि हमारा स्टे यहाँ पर शॉर्ट है. We are for the day and हमें क्रॉस करने हैं around 5 villages, so we are taking boat over here. और हम सब जो है व्यू पॉइंट्स को देख के एंड विलेज को एक्सप्लोर करके फिर वापस रहेंगे. Oh, I can see somebody is peeking out. Where are you? I'm here. I'm here. So over here you can see there's a cooking class and it's at 4 o'clock. So you can register yourself and you can make some pastos and some special recipes with the chefs. And a fun play area as well, right? Yeah. Let's have some flights. Yeah. The challenge. I did the challenge. Yeah. You did the challenge in the back? Yeah. Okay. So guys, now we are done with the viewpoint. अब हम नीचे जा रहे हैं towards the village to explore the village. तो चलें हमारे साथ and see Manarola. Yeah. Even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And I So guys, this is the street of Manarola. It's very crowded. लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है लोग खुल भी जाते हैं because there is a cooking classes also which are mostly in the evening after the 12 and all. So लोग यहाँ पर आकर classes भी enjoy करते हैं. So let's go and explore more. yeah. Even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying next to me. Everything feels like So guys, this beautiful souvenir shop. यहाँ पर लेमन की बहुत अच्छी सेंट आ रही है and there always lemon over here. So I think lemon यहाँ पर जो है काफ़ी स्पेशलिटी में है. everything feels like yeah. So guys, we are done with the Manarola as well. यहाँ पर हमने स्विमिंग और डाइविंग तो करनी नहीं थी. So we have explored the village. और अब जा रहे हैं हम अपनी तीसरी डेस्टिनेशन पर and the third village. So let's go with us. Even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. Hi guys, welcome to Vernazza. This is the third town. हमने बीच में एक टाउन जो है वो स्किप किया है because there is so much hike over there. So हम वापसी में देखेंगे अगर हमारी हिम्मत हुई तो हम उसे भी कवर करेंगे. बट अभी चलते हैं और वर्नाज़ा को एक्सप्लोर करते हैं. Let's go. So guys, जो टाउन हमने स्किप किया है दैट्स कॉल्ड निगिया. और वहाँ पर जो है लोग वैसे भी कम जाते हैं बिकॉज देयर आर टू मच स्टेयर्स ओवर देयर. ऊपर जाने के लिए आपको बहुत सारी स्टेयर्स पर जाना पड़ता है एंड देयर टू मच हाइकिंग ओवर देयर. तो हमने कहा जब तक हम फ्रेश हैं विल एक्सप्लोर द अदर विलेजेस एंड वापसी में हम देखेंगे इफ वी गॉट द गट्स और हिम्मत हमारी हुई सो विल एक्सप्लोर दैट. अदरवाइज ये कि हम उसे स्किप कर देंगे. लेट्स सी हाउ इट गोज. तो गाइस लंच की यहाँ पे कोई प्रॉपर जगह तो है नहीं. तो हमने लिया है यहाँ पे पिज़्ज़ा स्लाइस विद टोमेटो स्पेशल सॉस एंड द चीज़. So let's have some lemon drink and pesto pizza. Let's go and have some food. Yep. So guys, here you can see it is most touristic, most crowded. यहाँ पर बहुत सारा रश नज़र आ रहा है और काफ़ी सारे टूर ग्रुप्स जो आए हुए हैं. तो दिस विलेज इज ऑल्सो वेरी नाइस टू एक्सप्लोर. बट ये है कि क्राउडेड काफ़ी है. Are you enjoying your fish? Do you like it?
guys, on my back side you can see over there is a small market and यहाँ पर जो है fish and chips ज़्यादा चलते हैं. People are having fish and chips and Afan is also having fish and chips. So guys, over there you can see on the green side there is a hiking trail और वहाँ पर लोग जो है हाइक भी कर रहे हैं. Up there and have a view of both Vernazza. So guys, here you can see on the back side, here you can see the boat ride. People are swimming over here. So this is the marina area. ऊपर जो है यहाँ पर castle भी है. You can have the views as well. But ये कि हमारे पास time short है, तो हम castle में नहीं जा रहे. Otherwise it will take 2 to 3 hours to go up there and come down. Come on, Bailey. Stop. You can see all these. There's so many little fishes. So guys, this wrapped up our Vernazza में हम घूम चुके हैं. लोग बढ़ते जा रहे हैं और अब हम जाएंगे our 4th village which is Monteresso. तो चलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और जाते हैं Monteresso.